स्वागत है KCDC टीवी ते दर्शकों खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन जीटी रोड विखे विकसित भारत मुहिम के तहत जिहड़ा एक सैमीनार करवाया गया जिस विच साडे खालसा यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सरदार महल सिंह जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर खुशविंदर कुमार जी उन्होंने शिरकत की। इस तो इलावा स्टाफ स्टूडेंट्स हाजिर सन। ते की है विकसित भारत मुहिम ते की सी इस सैमीनार का मोटिव, चलो लैके चलते हैं तुहानू खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन जीटी रोड विखे। Guidance and support have always led us towards encouragement. I also extend my heartfelt greetings to our esteemed teachers who play a pivotal role in shaping the minds of young learners today. A special welcome to our distinguished resource person, Mr. Viksit Bharat, whose insights and knowledge will enlighten and inspire us today. And of course, a warm welcome to all the fellow students, the torch bearers of our nation, the youth of India, to today's Yuva Connect program. Now, I would like to request Honorable Registrar Sir to kindly felicitate our Honorable dignitaries present in today's event. As we gather here today, let us remember that the journey of Viksit Bharat is not just about economic growth, but also about empowering the youth to become responsible, innovative and committed citizens. This program encourages us to connect with the vision of our Honorable Prime Minister, who has continuously emphasized the role of youth in nation building. With these words, I once again welcome you all and look forward to an inspiring and enriching session. Now, with great respect, I take the privilege to invite our esteemed dignitaries on stage for these two. I warmly invite our respected Vice Chancellor Sir, Dr. Mahal Singh Ji, our esteemed Registrar Sir, Dr. Kushwinder Kumar Ji, along with the honorable teachers, Dr. Gurjeet Kaur, Program Coordinators, Mrs. Anju Sharma, Mrs. Amanpreet Kaur. First of all, good afternoon to all. मेरा नाम रसिक सोडी, मैं इसे कॉलेज का जर्नलिज्म ते मास कॉम का स्टूडेंट हाँ। ते बड़ी खुशी ने दसना चाहना कि सिर्फ इंडिया के विचों 75 स्टूडेंट सिलेक्ट होया विकसित भारत प्रेजेंटेशन के लिए। Among from that I am from one and there are only 3 students are selected from Punjab. ते मैं अमृतसर खालसा यूनिवर्सिटी होल्ड कर रहा। Now we'll start our topic. First of all, I would like to thank my teachers Anju ma'am and Aman ma'am. Along with them, मैं BC sir का भी बहुत धन्यवाद करता। Especially the researchers are also जिन्होंने बहुत हेल्प की है इस कंडक्शन के विच। So let us start our presentation. So first of all, guys, मैं आप सारे के सामने एक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अपनी presentation. इसका टॉपिक है विकसित भारत। विकसित भारत तो भाव है हमारा डेवलप्ड इंडिया। We all know India is a developing country. ते साडी जिहड़ी NDA गवर्नमेंट आई हुई है ਉਹਦਾ ਆਹੀ ਗੋਲ ਹੈ कि that we make our India developed till 2047. 2047 तक सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਈਏ।